Is it worth it to spend 2200 rupees on a movie ticket? Let's find out. आज का मेरा रिव्यू US Cinemas Elegante Mall that has just recently opened in NSP उसके ऊपर रहेगा. I went there to watch Border 2. As you can see, parking में कोई issue नहीं था. Parking space ample है. You have basement parking, which is a good thing. Look and feel of theater is quite premium and लगता है आप कुछ अच्छी luxury newly made place पे आए हो. I actually booked the ticket for the Lux category, so my review would be more or less focused on that. जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कॉमन कैफे एरिया है दैट केटर्स टू बोथ द नॉर्मल स्क्रीन एज वेल एज द लक्स स्क्रीन, सो एनीबॉडी कैन एक्चुअली परचेज फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे दो कैटेगरीज की स्क्रीन्स हैं. एक है PXL विच इज़ एक्चुअली योर रेगुलर थिएटर जहाँ पे टिकट्स आपकी दे आर एक्चुअली रीजनेबली प्राइस्ड. एंड देन द सेकंड कैटेगरी इज लक्स वेयर दे आर प्रीमियम रिक्लाइनर्स जहाँ पे प्राइसेस कैन वेरी फ्रॉम 1000 to 2200 depending on the day and time you choose. There's a narrow lobby that takes you to the Lux part of the cinema where you have dedicated luxury screens. You also have a dedicated cafe to yourself. Now talking about the seat comfort itself, as you can see, the number of rows in this theater are less, but still there's adequate spacing between the rows so you'll not feel that you are in a very small theater. Screen size and sound are also good quality. I'll say the screen size is not very big, but still it's not that small as well. Medium size का ही रहेगा and sound is top notch. So no issues there. Seat में आपको adjustable tilt controls मिलते हैं जहाँ पे seat fully recline हो जाती है. You can also adjust your headrest. Attendant को बुलाना हो तो you can just push a button and call the attendant. You also get a small lamp just beside the seat. Talking about the food, it is on a higher side. Also, if you are going for large popcorn tub और पेप्सी, उसको रिफिल कराने के लिए आपको PXL स्क्रीन्स के साथ वाले कैफे में ही जाना पड़ेगा. ना तो वो लक्स वाले कैफे में करेंगे ना ही वो ऑन सीट करेंगे, which I think was not a good thing. Also, one hack would be that you can actually buy things from the common cafe if you want to save on money, as the prices are somewhat lower there. However, they do provide cutlery, which is a good thing. जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी वो था स्क्रीन पे कांस्टेंट ये येलो शैडो या रिफ्लेक्शन जो मोस्ट प्रोबेबली किसी सीट की लैंप से आ रहा था. ऑब्वियसली यू कांट एक्चुअली टेल एनीवन टू काइंड ऑफ स्विच इट ऑफ, बट शायद ये प्रॉब्लम इन लक्स हो सकती है बिकॉज यहाँ पे लैंप का ऑप्शन है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डेंट फाइंड एनी मेजर इशू. सो दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको लक्स एक बार एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर आपको करना चाहिए. एंड आई ऑल्सो डिड द सेम. But if you are looking for a wow factor, you might not find one because apart from the seat comfort, I didn't find anything too amazing. Moreover, I feel that sitting on a recliner might make you sleepy and your attention span might be reduced. The staff is courteous, but the downside is that उनका constant आना जाना आपको शायद तंग कर सकता है because obviously people keep ordering while watching the movie. In all, I think the experience is good, but the only problem is that the price doesn't actually defines the value that it offers. I didn't find anything too amazing. So अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. The hack would be कि आप मॉर्निंग शोज लेने का ट्राई करो where you can save a lot of money. If you like this video, do drop in your comments. Thanks for watching.